लोक निर्णय 2024। Welcome listeners to our ongoing series on elections Loknirnay 2024. In this program, we bring you election-related developments, various updates and analysis of general and assembly elections 2024. I am Kaushik Rai with my co-anchor Vishal Sharma. नमस्कार, आप सुन रहे हैं लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। इस कार्यक्रम में हम चुनाव से जुड़े समाचार तो आप तक लाएंगे ही, साथ ही उन पर चर्चा भी करेंगे और इसके अलावा अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी जाएंगे और जानेंगे वहां की चुनाव तैयारियों के बारे में। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं कौशिक रॉय। Election Commission of India censures Bharatiya Janata Party MP Dilip Ghosh and Congress leader Supriya Srinath for derogatory remarks against women. Meeting of BJP's Election Manifesto Committee held at party headquarters in New Delhi. Former Aam Aadmi Party MP Dharamveer Gandhi joins Congress. BJD's MP from Kendrapada, Anubhav Mohanty joins Bharatiya Janata Party today. निर्वाचन आयोग ने महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए भाजपा सांसद दिलीप घोष और कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत की निंदा की। भाजपा की चुनाव घोषणा पत्र समिति ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बैठक की और आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मवीर गांधी, कांग्रेस में हुए शामिल केंद्रपाड़ा से बीजू जनता दल सांसद अनुभव मोहंती ने थामा भाजपा का हाथ। सबसे पहली खबर, निर्वाचन आयोग ने महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए भारतीय जनता पार्टी सांसद दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की निंदा की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भाजपा सांसद दिलीप घोष के बयान की कड़ी निंदा की है। आयोग ने श्री घोष को चेतावनी दी है कि आदर्श आचार संहिता लागू है और इसलिए सार्वजनिक बयान देते समय सावधानी बरती जाए। आयोग ने भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार कंगना रनौत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को भी चेतावनी दी और उन्हें सार्वजनिक बयान देते समय संयम रखने को कहा। The Bharatiya Janata Party today knocked the doors of the Election Commission over senior Congress leader Rahul Gandhi's match-fixing allegations on the party with regard to the Lok Sabha polls. A BJP delegation led by senior party leader and Union Minister Hardeep Singh Puri also brought to the notice of the Commission Mr. Gandhi's allegations of undermining Indian democracy as well as remarks related to the electronic voting machine issue. Talking to media after meeting the poll body in New Delhi, Mr. Puri accused Mr. Rahul Gandhi of doing low-level politics. He said they have urged the Commission to take stringent action in this matter. Another party leader, Arun Singh, alleged that Congress and other opposition parties are making such allegations sensing their defeat in the Lok Sabha polls. Yesterday, while addressing an opposition rally at Ramlila ground in Delhi, the Congress leader, Mr. Rahul Gandhi, has alleged that BJP cannot win the Lok Sabha polls without EVMs, match fixing and central agencies. भारतीय जनता पार्टी की चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई। समिति ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र पर विचार विमर्श किया। 27 सदस्यीय समिति की पहली बैठक वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई। वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन संयोजक और पीयूष गोयल पैनल के सह संयोजक हैं। इस बीच कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने तेलंगाना में लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए नई दिल्ली में बैठक की। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और अन्य इस बैठक में शामिल थे। Kendrapada's BJD MP Anubhav Mohanty today joined the Bharatiya Janata Party. He was inducted in the party in the presence of BJP General Secretary Vinod Taude at party headquarters in New Delhi. Mr. Mohanty had recently resigned from the Biju Janata Dal. Former Aam Aadmi Party MP Dharamveer Gandhi joined the Congress party today. He joined the party in the presence of Congress leader Pawan Kheda and others in New Delhi. Mr. Dharamveer Gandhi was an MP from Patiala Lok Sabha seat in Punjab. भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं।
उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जयपुर में संगठन के साथ बैठकें की। श्री अमित शाह ने जयपुर में पार्टी नेताओं की बैठक में 5 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों दौसा, करौली, धौलपुर, नागौर, चूरू और झुंझुनू में पार्टी की चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। And Vishal, we are joined with political analyst Shekhar Iyer. Good evening, Shekhar ji. And today we have seen that the Election Commission has censured two very senior politicos from both the ruling and opposition parties. And this, would you think, sends a signals to all to exercise restraint while making public statements? Thank you, Mr. Kaushik. Definitely, Election Commission's decision today will rather set an exemplary, kind of an action by the EC in cases of violation of the Model Code of Conduct. Both the leaders, both Supriya Srinath of Congress and Dilip Ghosh of the BJP have been told not to make such remarks, because Dilip Ghosh has made some remarks about West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, and Supriya Srinath. A tweet had some very, very disparaging remarks about the BJP candidate from Mandi, Kangana Ranaut. So I think Election Commission has acted swiftly on the basis of complaints filed by the opposite parties in both the cases, and such action should be taken. And in fact, we have had seen previously when Election Commission had even barred some star campaigners from for a few days for making such remarks. जी शेखर जी, आज भारतीय जनता पार्टी की चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई है, और ये जो इस बार 27 सदस्यीय समिति बनाई गई है, इसके अध्यक्षता जो है केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने की है बैठक की, और निर्मला सीतारमण को इसका संयोजक बनाया गया है। इस बार जो पार्टी भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो अपने घोषणा पत्र पर जो तैयारी कर रही है, क्या लगता है आपको किन मुख्य बिंदुओं पर पार्टी का फोकस इस बार घोषणा पत्र को लेकर हो सकता है? देखिए, इस बार मुझे लगता है कि जिस तरह प्रधानमंत्री लगातार विकसित भारत की जो उसकी कल्पना की है, उसको लेकर जो सरकार की तरफ से कितने कार्यक्रम भी लॉन्च हुए हैं, तो मुझे लगता है कि बीजेपी मैनिफेस्टो में विकसित भारत की रूपरेखा क्या होगी, उसके लिए बीजेपी किन किन विषयों पर, किन किन बिंदुओं पर वचनबद्ध है। और बार बार एक बात की जा रही है कि मोदी जी की गारंटी, तो मोदी जी की गारंटी मतलब क्या है, बीजेपी की गारंटी क्या है, इसके बारे में बहुत डिटेल होगा। और मुझे लगता है बेरोजगारी दूर करने के लिए, ग्रोथ स्टोरी बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, शिक्षा की जो क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य की कंडीशन की इंप्रूव करने के लिए, और आगे जाके कृषि क्षेत्र में क्या क्या बदलाव लाना है, हमारे किसान भाई को जीवन में किस तरह की बड़ा चेंजेस कैसी आनी है, उसको लेकर कई मुझे लगता है कि स्पेसिफिक टारगेटेड अनाउंसमेंट्स होगी। जी, और अब हम बात करेंगे अपने Shekhar ji, I'd also like to ask you that today is the 1st of April, and in about 18 days we will see the first phase of polling in this 7-phase Lok Sabha polls, and one of the most important states that goes to the polls is Tamil Nadu on the 19th of April. So what is your reaction into the campaigning, and how is it going on in Tamil Nadu? Well, all the candidates are out in the field. This time BJP is fighting this election with full earnestness. Prime Minister has made several trips to Tamil Nadu, and on the last 2 days you have seen how Kachitivu has become a big political issue in Tamil Nadu, because it is about the plight of our fishermen who are unable to fish because of actions often being taken by the Sri Lankan Navy, and the whole story about how India had given away Kachitivu to Sri Lanka. That story is also coming out, how 1974 agreement, then 76 agreement, where fishermen were initially told that there would be no problem if they went to those areas. But now, subsequently, we have seen as our External Affairs Minister Jaishankar held a press conference to say that nearly 21,000 Indian fishermen have been held by the Sri Lankan authorities, and more than 1,000 fishing boats have been seized.
So there is a problem regarding the Kachitivu interpretation of the fishing rights, which has often been a problem. But Congress and DMK have been attacking the Modi government in parliament, saying, when are we getting back Kachitivu? And what has happened is this RTI has now disclosed how the people who gave away the Kachitivu on a platter virtually are the people who are now raising questions as to when the Kachitivu will come back. So it has become a political issue where the BJP is trying to show, and that look, the whole problem started because the way you handled that issue. Right. And today it has reached a point where it is about the economic condition of our fishermen, about our fisheries along the coastline. Right. We'll be back with you, Shekharji, in just a short while from now. Loknirnay 2024, a special program on the general elections, every evening at 7. And repeat broadcast at 9:30 p.m. on Akashvani Gold. Updates of election activities, insights from regions and constituencies, expert opinion and analysis. In the world's largest festival of democracy. Stay tuned to Lok Prasarak ke saath, Loknirnay 2024. And now we have a constituency profile of this very important constituency of Tamil Nadu, Virudhunagar, a report by our reporter Joy and anchor Sarfirozi. In the Virudhunagar Lok Sabha constituency, Thiruparankuntam, Thirumangalam, Sattur, Sivagasi, Virudhunagar, Aruppukkottai are 6 assembly segments in which 4 constituencies belong to the DMK and Congress combined and 2 belong to the AIADMK. This time it is a 3-cornered contest in Virudhunagar. A total of 27 candidates are in the fray. As BJP is contesting the election along with smaller allies, its strength in the state will be tested this time. The party has fielded popular actress Radhika Sarath Kumar opposite Congress candidate Manikam Thakur. The star couple Radhika and her husband Sarath Kumar joined the party recently after Sarath Kumar merged his party, the Samatwa Makkal Katchi, with the BJP. Another popular candidate who is new to electoral politics is Vijay Prabhakaran, the son of late actor politician Vijay Kant, the founder of DMDK, which is now an ally of the AIADMK. जी शेखर जी, हमने ये विरुद्धनगर से अपनी संवाददाता की रिपोर्ट सुनी। और तमिलनाडु के चुनाव की बात हम इस बार करें तो 2014 में सारी की सारी 39 सीटें AIADMK को मिली थीं और तब जे जयललिता जीवित थीं। और अब हम देख रहे हैं कि कोई उनके कद का कोई आसपास कोई नेता है भी नहीं जो कि क्या कहते हैं AIADMK को आगे ले जा सके और अच्छी जीत दिला सके। तमिलनाडु में इस बार हम ये भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उभार एक देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि AIADMK के साथ जो गठबंधन नहीं हुआ है भाजपा का, इस बार कुछ नुकसान पहुंचा सकता है क्या? नहीं, वही तो सब लोग अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी इस बार अकेली चुनाव लड़ रही है। ADM के साथ होता तो जो डीएम के खिलाफ जो वोट है, एंटी DMK वोट, क्योंकि DMK 2021 में असेंबली चुनाव जीत के सत्ता पर आ गए थे, उसके बाद जो जिस तरह की सरकार रही है वहां पे भ्रष्टाचार का आरोप मंत्रियों के पर, और लगातार जो पब्लिक लाइफ में जो दिखाई दे रहा है कि भाई भ्रष्टाचार का पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, खास करके मुख्यमंत्री स्टालिन और उनके मंत्रिमंडल को लेकर जो बातें की जा रही है, उसको लग रहा है कि डीएमके के लिए काफी तकलीफ है इस चुनाव में, क्योंकि 2019 में डीएमके ने पूरे सारे के साथ जीत लिए थे, एक छोड़ के। हाँ, अवश्य जैसे आपने कहा कि क्या बीजेपी के लिए मुकाबला बड़ा चैलेंज बड़ा है, बिल्कुल चैलेंज बड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री के लगातार तमिलनाडु के दौरा और अन्नामलई की पदयात्रा, जो बीजेपी के वहां अध्यक्ष है, और इस बार भी बीजेपी बहुत जम से लड़ रही है। जिस तरह इश्यू सामने आ रहे हैं, जैसे अभी आपने कच्चितुवी की बात की, कई इश्यूज ऐसे जिसपे बीजेपी दिखाना चाहती है कि वो कितने कमिटेड है, और इस बार प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि भाई कोई आश्चर्यजनक परिणाम आने वाला है तमिलनाडु में। और वहां पे अभी 3 बड़े गठबंधन के ये पे चल रहा है। एक बीजेपी के साथ भी कुछ पार्टियां जुड़े हैं, और ADMK का एक गठबंधन है जो DMDK के साथ मिला हुआ है, और PMK जो है वो बीजेपी के साथ आई है। वो भी एक बड़ा नया फैक्टर है इस चुनाव में। तो कुल मिलाकर देखा जाए, ये मतलब सब लोग कह रहे हैं कि 2019 का रिजल्ट तो कभी नहीं आएगा, लेकिन बीजेपी अपने खाता खोल पाएगी, क्योंकि इतनी जिस जोश से लगी है। और प्रधानमंत्री फिर जाने वाले हैं, 1-2 दिन में जा रहे हैं तमिलनाडु। अभी भी उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके एक इंटरव्यू दिया था एक तमिल चैनल को, आपने देखा होगा। तमिल में ही वो कई
उनकी जवाब सब तमिल में भी दिया गया था। तो एक तरफ से प्राइम मिनिस्टर की जो कोशिश है तमिलनाडु, तो किसी तरह बीजेपी वहां पे अपनी खाता खोल ली है, अपनी मतलब जड़ से वहां पे एक फाउंडेशन बना के ये विकल्प के रूप में आना है, यही प्रधानमंत्री की वहां की लक्ष्य है। जी, और अब मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या वहाँ पर मुजफ्फरनगर में, अगर हम लोकसभा क्षेत्र की बात करें, तो क्या स्थिति आपको वहाँ दिखाई दे रही है? कौन कौन से प्रमुख उम्मीदवार इस समय चुनाव मैदान में हैं वहाँ पर? मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इनमें 4 विधानसभा मुजफ्फरनगर जनपद की बुढ़ाना, चरखावल, खतौली और मुजफ्फरनगर हैं। वहीं मेरठ जिले की एक विधानसभा क्षेत्र सरधना भी इसी लोकसभा क्षेत्र में आती है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या 18,10,628 है। भाजपा ने तीसरी बार यहां से केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में वो इस सीट से जीत हासिल कर चुके हैं। 2019 में यहां रालोद के चौधरी अजीत सिंह और संजीव बालियान के बीच में सीधा मुकाबला हुआ था। चुनाव में अजीत सिंह को सपा, बसपा और कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया था। इस चुनाव में रालोद के चौधरी अजीत सिंह से कड़े मुकाबले में संजीव बालियान ने 6,526 मतों से जीत हासिल की थी। इस बार राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के साथ आ गया है। 2019 में लोकसभा सीट पर 10 प्रत्याशी मैदान में थे और इस बार यहां 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो अब तक यहां कोई भी 3 बार नहीं जीत पाया। संजीव बालियान और सुमत प्रसाद जैन ही यहां 2-2 बार चुनाव जीत सके हैं। इस सीट पर जीतने और हारने वाले दिग्गजों में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद और चौधरी अजीत सिंह शामिल रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद यहां एक बार जीतकर देश के गृह मंत्री बने थे। दूसरी बार उन्हें भाजपा के नरेश बालियान ने हरा दिया था। Shekhar ji, you just heard the constituency profile of Muzaffarnagar, a very important seat in the western Uttar Pradesh. And in the first phase on the 19th of April, 8 seats of western Uttar Pradesh are going to the polls. And how do you weigh this? See, this constituency, the fight for in this constituency has become very interesting after, the RLD has joined the India Alliance. And Prime Minister had addressed a huge rally in Meerut only a day ago. We have seen that how there has been a huge response to the Prime Minister's rally, and also the fact that Mr. Balian is contesting in this constituency. He is seen as a very strong candidate, and there have been incidents of violence targeted at Mr. Balian. In fact, some people had pelted stones on his car that is on March 31st. And then subsequently also there has been tension in pockets which the law and order authorities are dealing with. This is an election that is going to see, rather will test the alliances that have been, the new alliance that has been formed between BJP and RLD. And this time the general feeling is the mood is heavily in favor of the Prime Minister, which should impact each and every constituency in the region. We'll come back to you later, Shekhar ji. And now we go over to our reporter Gulshan Raina for the constituency profile of Udhampur. The 4 Udhampur parliamentary constituency is the most developed constituency in India, and the constituency covers 5 districts of Jammu division including Kathua, Udhampur, Doda, Kishtwar and Brahman. There are a total 16,74,277 electorates in the constituency. The constituency has 18 assembly segments and 2,637 polling stations. The last date of filing of nomination paper by the candidates or their proposers for the parliamentary constituency was March 27, 2024, and the scrutiny of the nomination papers was done on March 28. The candidates have the option to withdraw their candidature on March 30, 2024. In all, 15 candidates including Dr. Jatinder Singh and Premnath from Bharatiya Janata Party, Amit Kumar and Tilakraj from Bhojan Samaj Party, former Minister G.M. Saruri from Democratic Progressive Azad Party, DPAP, former Minister Chaudhry Lal Singh and Devya Suraj Pratap Singh from Indian National Congress, Rajesh Manchanda from Rashtriya Krantikari Samajwadi Party, Sachin Gupta from Inqilab Vikas Dal, IVD, Manoj Kumar from Ekam Sansthan Bharat Dal, Balwan Singh from J&K National Panthers Party, and Muhammad Ali Gujjar, Swaranveer Singh Jaral, Mehraj Deen
and Dr. Pankaj Sharma as independent candidates have filed their nomination paper. Now there are 12 candidates from different political parties and independent in fray for the 4th Udhampur parliamentary constituency, polling for which is scheduled in the first phase on April 19, 2024 from 7 am to 6 pm. The other parliamentary constituencies of J&K, that is Jammu Riasi seat, will have voting in the second phase on April 26, Anantnag Poonch Rajouri in third phase on May 7, Srinagar in fourth phase on May 13 and Baramulla in fifth phase on May 20. Shekharji, the first elections in Jammu and Kashmir post the abrogation of Article 370, and this is what everyone is expecting to be the elections in Naya Kashmir. Your take on this? Definitely, it is a new atmosphere under which the Lok Sabha elections are being held in Jammu and Kashmir. And even in 2019 elections, we have seen that Dr. Jitendra Singh, the Union Minister, had won Udhampur with a total of 72,000 votes. And whereas the Vikramaditya Singh, who was a nominee of the Indian National Congress, had received only 36,000 votes. So BJP in 2019 had secured 61% of the, 61% of the votes in the polls. So therefore, we are seeing, and Jitendra Singh had won the first time in 2014, where he had also, performed very well. So this is one election. Definitely, it is more than about Dr. Jitendra Singh getting a third term, but it is also about the people's mood in the wake of the removal of the Article 370. We'll be back with you shortly, Shekharji. And now it's time for a break. लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। Welcome back, and now we are joined by our RNU correspondent from Chennai, Joy. Good evening, Joy. Now that the nominations have been finalized and campaigning for the single phase polls have begun in Tamil Nadu, what is going on in Chennai, the capital of the state? Yeah. In Chennai, it is always, the festival of democracy raises much expectation. But every time election is on the screen, I don't know what happens to our voters here. Only 60 to 65% of voters register their votes. Most of them, I think they go to their native places. Almost 6 crore population we have in Chennai. But when election comes, the registration of voters, the electorate number is very less, and it is very concerning at times. The total electorate is less than 40,000, but still the percentage is very less. Chennai has 3 constituencies, which is Chennai North, Chennai South, and Chennai Central. Though election fever is still to catch on, but with all the metro work and lot of work which is going on, people are still listening to roadside public meetings and road shows. There is a festive atmosphere here. And in North Chennai particularly, you can see people always there on the road. Numerous small-scale and large-scale industries are situated here. And every time, it is a very difficult situation to have a meeting there in those roads. So all the meetings are held in streets. So they have small meetings inside the streets, and road shows are the best thing they consider to reach the people well. And a lot of publicity is going on through pamphlets. People distribute pamphlets. Politicians are driving through the streets and waving at the crowds and listening to their grievances. And these are all scenes that you can see. Right, Joy, thank you very much for joining us. Yeah. Shekharji, you just heard our correspondent from Chennai lamenting the fact that the
voting percentage does not seem to be going up in Tamil Nadu. And to what do you attribute this? No, this is a phenomenon of our cities, particularly where there is some amount of apathy, particularly among the middle class voters. And Election Commission has been constantly endeavoring to see that more and more people come to vote, particularly the youngsters, the youth are encouraged to come and cast their votes early. And many times Election Commission has made it clear to the voters that they should treat their casting of ballot as a sacred duty. Incidentally, the Chennai, all the three Lok Sabha constituencies have very high-profile candidates. So there is an intensive campaign going on by all of them. And apart from the main, candidates, there are nearly 107 candidates who are in the fray, in all the three constituencies after the last date of withdrawal. So therefore, you are seeing a lot of enthusiasm among the workers of different parties. For instance, Chennai South constituency has got, the sitting MP who is the Tamilarachi Subati of the DMK, and Tamilisai Soundararajan, who was until recently Telangana governor. She is one of the important candidates from the BJP. Then there are candidates from ADMK also. Right. Shekharji, will be coming back to you shortly as we have with us. अपर्णा खुंत हमारे साथ अहमदाबाद गुजरात से जुड़ गई हैं। अपर्णा, लोकसभा चुनाव के लिए गुजरात में किन नामों को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है और क्या चुनावी सरगर्मियां देख रही हैं आप वहाँ पर? जी, गुजरात में जैसे कि मैंने बताया कि पूरे 26 सीटों के ऊपर एक ही चरण में 7 मई को मतदान होना है और इसके साथ साथ राज्य की जो 5 विधानसभा सीटें हैं उसके लिए भी उपचुनाव उसी दिन में होने हैं। तो गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी ने सभी 26 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अब तक 17 उम्मीदवारों के नाम घोषित की है और आम आदमी पार्टी के 2 उम्मीदवार मैदान में है। यहाँ पे गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन है, जिसके सीट शेयरिंग फॉर्मूला के मुताबिक 24 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और 2 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो गांधीनगर सीट जो है, जो बहुत हाई प्रोफाइल सीट है, जिसमें भाजपा की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मैदान में है और अमित शाह जी के सामने कांग्रेस ने अपनी महिला नेता सोनल पटेल को मैदान में उतारा है और इस बार AIMIM पार्टी ने भी गांधीनगर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। हालांकि अभी तक कोई उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया जी है। अपर्णा, हम आपसे और भी जानकारी लेंगे फिर कभी, लेकिन अभी हम अपने एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे। शेखर जी, बहुत ही संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो है, जो 2014-2019 में सभी सीटें गुजरात में भाजपा ने जीती और इस बार भी जो प्रधानमंत्री मोदी के रूप में भाजपा के पास तुरुप का इक्का है, अपने गृह राज्य के समर्थकों पर अब भी उनकी पकड़ है, लेकिन क्या इस बार जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वहां मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ये कुछ चुनौती दे सकते हैं भाजपा को वहां पर? मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ा चुनौती होगा, क्योंकि हमने देखा है कि अगर असेंबली चुनाव की नतीजा ले लेंगे, दोनों को वोट मिलाने से भी बीजेपी का कैंडिडेट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आगे थे, इसलिए कोई ज्यादा फर्क होने वाला नहीं है। और दूसरी चीज, कांग्रेस के कैंडिडेट्स आपने देखा कि किस तरह कुछ कांग्रेस कैंडिडेट्स लास्ट मिनट में विड्रॉ भी कर लिया कि हम चुनाव नहीं लड़ना है। ऐसे 2 कैंडिडेट्स हैं जो विड्रॉ कर लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। फिर भी एक गठबंधन बना है, वो गठबंधन कैसे ग्राउंड लेवल पे काम करेगा ये हमें देखना है। Shekhar Iyer ji, today you have given your valuable inputs on the election campaigning in Tamil Nadu, in Jammu Kashmir and in Gujarat. You discussed various issues and enlightened our listeners with your valuable inputs. Thank you so much indeed. और धन्यवाद हमारे उन सभी संवाददाताओं का भी जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, और साथ ही साथ श्रोताओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हमारी उस पूरी टीम का भी लोक निर्णय से जुड़ी हुई, जिसके प्रयासों से ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा। और ये कार्यक्रम श्रोताओं आपको कैसा लगा, हमें अपने सुझावों के जरिए ज़रूर बताएं। You may email your opinion about this program at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 92890940044. With this, we conclude this program. We will bring you more election-related news and political developments tomorrow at the same time. Namaskar. लोक निर्णय 2024।